का जमाना, माँ का फिक्रमंद होकर कपड़ों से हमें लादना और गरम गरम दूध पिलाना, पिताजी का गर्म सर्द दुलार, जैसे ओस का शीत से ठंड से पत्तियों पर जमना, फिर धूप की किरणों से नमी बनकर पिघलकर बहना, गुड्डे गुडियों कठपुतली पतंगों का खेल, फिर एक बार याद आया बचपन के उन सपनों का मेल। बचपन से आज तक की हमने ये पूरी जिंदगी लांघी, हमने क्या खोया और क्या पाया। पाया तो बहुत कुछ, बट खोया भी अपनी मार्मिकता, अपनी समटाइम्स ह्यूमन वैल्यूज, अपनी इनोसेंस। जिस तरीके से हमारे क्रिएटर ने हमें बनाया था, क्या हम वैसे ही रहे? As we grow, we evolve. Most of us develop a shield, a covering around us in our persona. Sometimes it is harsh, impregnable to the realities of life. We seem to lose our humanity, human values as we face challenges. खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की शिनाख्त में तो हर कोई माहिर है जनाब। आज का हेलो जिंदगी का टॉपिक फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रजापिता ब्रह्मा का उल्लेख हम उर्मिल दीदी से सुनेंगे और उसे अपने निजी जिंदगी में उतारने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हेलो जिंदगी के छठे पड़ाव पर आज हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हेलो जिंदगी AIWC न्यू दिल्ली हेड ऑफिस और ब्रह्म कुमारी पालम विहार के सौजन्य से हर सप्ताह के मंगलवार को ये सेशन होते हैं। It is primarily for the staff of AIWC and for all of us, those who are interested and inclined. It is primarily to build up life skills and to cope up with these uncertain times. अब कोविड कभी जा रहा है फिर आ रहा है, हम लोग इतनी इनसिक्योरिटी है। I think these sessions are very useful for helping us cope with this stress. अब हम ये मधुर गीत एक दिया दुआ का जलाएं सुनेंगे। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। दिया
मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। धन्यवाद चंचल पंत जी, जो हमारी फैकल्टी कटिंग एंड टेलरिंग एट द AVI सेंटर AIWC अब फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करेंगे, फॉर्मल वोट ऑफ वेलकम प्रपोज करेंगे। सभी नमस्कार, ओम शांति। मैं चंचल पंत हेलो जिंदगी के छठे सेशन पर AIWC प्रेसिडेंट शीला काकड़े जी, सेक्रेटरी जनरल कुलजीत कौर जी, मैनेजर रेहाना जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी श्वेता राय तलवार जी व उपस्थित AIWC मेंबर्स व स्टाफ का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज की वक्ता दीदी उर्मिल जी का भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। दीदी उर्मिल जी हम सभी को आज मानवता के पिता ब्रह्मा जी के बारे में अपने विचारों से लाभान्वित करेंगी। मैं आशा ही नहीं अपितु विश्वास करती हूँ आप सभी दीदी उर्मिल के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। अब मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी श्वेता राय तलवार जी से आग्रह करती हूँ वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद चंचल जी, आपने बहुत सुंदर वेलकम किया। आज की हमारी प्रिय स्पीकर उर्मिल दीदी का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। व्यक्तित्व में और उनके डिस्कोर्सेज में शी इज इक्वली पावरफुल। उर्मिल दीदी ब्रह्म कुमारी सेंटर पालम बिहार की डायरेक्टर हैं। 22 इयर्स उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करके फिर उन्होंने 2000 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 45 years of experience in social upliftment, which is really immense, has helped people in uplifting them socially all over the world. बचपन से ही दीदी का रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ है और ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मास्टर ट्रेनर का भी कार्य कर रही हैं। पीस एंड हार्मनी में आपका काम सराहनीय है। उर्मिल दीदी, प्लीज आप हमें कुछ अपने शब्दों से लाभान्वित करिए। Thank you, dear sister Shweta. Good afternoon and Om Shanti, everyone. I hope all of you are able to hear me. Yes. Shweta? Yes, fine. Thank you very much. मेरे टाइम मन में बहुत समय से था, आप लोगों ने जब ये कहा कि 18 जनवरी
We will be having our own meeting from 18th January onwards. So, many things about Brahma Kumaris. तो मेरे मन में आया, the one thing which they do not know, I must share with them. And that is on 18th January, the founding father of this institution. He left his body and he attained perfection. So we celebrate 18th January as World Peace Day on this very day. And the speciality about this person is that I would like to share, because it is not only the father of Brahma Kumaris or Hinduism, but he is the father of all the souls of the universe. How? That I'm going to share with you so that you can understand the perspective behind it. ब्रह्मा को हम लोग सब मानते हैं. ब्रह्मा के different names. Can you anybody tell in all the religions? Whatever religions are prevailing, like Hinduism, Christianity, Mohammedans, so Jainism, how the Brahma is known as? Huh? Okay, so Brahma is known as Adam, isn't it? In Christianity, he is known as Adam. और इसी तरह से Muslims में he is known as Adam. Know that? Huh? He is known as Adam. And then in Jainism, he is known as Adi Dev. Adi Dev. So the Brahma, the father, he is not only the father of Hinduism, but he is the father of all the souls, those who exist in the world. How he is the father of all the souls, those who exist in this universe? क्योंकि ब्रह्मा के लिए कहा जाता है that he had a thought in his mind, and through thought he created the universe, new world order. अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थॉट से कैसे क्रिएट करेंगे? दिस इज द टास्क, हाउ इट स्टार्टेड, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. In at Pushkar, when we go, we just found Brahma in this form. In Hinduism, of course, this is in Hinduism, but this has a symbolic meaning. It has nothing to do with Hinduism. Actually, basically, we have to understand the sustainer of this universe in the right perspective. हम लोग देख रहे हैं that he is shown with lotus in one hand. Why lotus? Lotus is a symbol of that while living in this world, we have to be away from negativities. हमारे मन में जो negative influences हमको touch कर जाते हैं, so we have to keep ourselves from this. And the second hand, we are finding the scriptures in his hand, और जो इस तरह से दिखाया है that he is carrying in such a way, which means कि शास्त्रों का जो निचोड़ है, जितने भी हमारे पास स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, so when through his medium God the point of light incarnates, then he narrates this the essence of all the scriptures, or which are existing, whether Hinduism, whether Muslims का जो भी हमें मिलते हैं, सबका वो सार आके सुनाते हैं. And in third hand, we are finding that there is Jap Mala. Mala means, all the time it is a symbol of Manmana Bhav and Madhyaji Bhav. Manmana Bhav means, that we have to remember God, the supreme power, all the time. Like, thoughts run whole day in our mind. But when we make that thought a good thought, so then it becomes Suman. Suman means मेरा मन जो है अच्छा बनने लगता है. So all the tasks which I am doing, like a child asks his mother or her mother or her father, his father, that what shall I do? How shall I go? How shall I move? How shall I write? So similarly, the soul should connect to the Supreme Soul all the time. So this is why it's a representation of Manmana Bhav. Then the Kamandal is shown. It is shown just that we have to which is full of water. It means that daily we should take the nectar of godly knowledge. So if we take the nectar of godly knowledge, so then, we can purify the life. And this is what we are doing in AIWC, that not every day, but every week we are sharing, and then we are carrying it forward the other days. And then there is something unique which we see, that the three faces are shown, the one is behind which cannot be shown in the picture. So this represents that the knowledge
which God, when he incarnates in the world, then the knowledge which is given that spreads in all the directions is a representation of direction. जैसे मेरा face अगर मानो smiling है and I am facing it to you, so my smile will go first to you, and then after you will reflect whatever vibration, it will go on to the other sides. So this is basically a symbol which represents, and the beard symbolizes maturity. Spiritual maturity is very important in life. If we are not spiritually mature, like Shweta, you were saying, that we should have values in our life. You know, when we have values in our life, even if somebody is saying something, we should take that thing in such a way so that the I'm able to win over that person also, means win the heart of that person as the things goes the right also. So this is why this picture is shown. And now I will tell you the real story, you know, that who is Brahma, who is the Adi Dev, who is Adam, which is worshipped and remembered in all the scriptures. The story is like this. In 1937, there was a simple man. His name was Dada Lekhraj. He was a Sindhi person. And he remembered God a lot, and he did many gurus, like, 12 gurus he did. And he wanted that I should meet God, somebody should tell me the way. But somehow he could not meet him. Then it was a deep desire, and there was some satsang was going on. This is his previous life, because he was a very famous jeweler and he had a very wonderful personality, royal personality, and from Sindhi background. So then, he shifted to simplicity when he got this knowledge. And then what happened? He was sitting in satsang. He got up from that satsang और अपने कमरे में उठ करके चले गए. तो जब ये अपने कमरे में उठ के गए, so then he felt that what has happened to me. The daughter-in-law, she went there to see him whether he is not well or what has happened. But then what happened, you see, जब वो वहां पर गई तो उन्होंने देखा that he is sitting in meditation and some tears are coming from his eyes and some voice is also coming out from his mouth. तो उसको कुछ नहीं समझ में आया what is all this. तो उसके बाद काफी देर तक she did not go back to the satsang, to the place where the people were sitting and listening to Guru. And then what happened, you see, later on, after a very long time, when he opened his eyes, then he told that he had 3 visions. What were these visions? If you understand it clearly, that will change your life completely. The first vision was he saw that destruction of the world is taking place. Like the third scene we are saying, that the destruction of the world is taking place through 3 reasons. The first was nuclear weapons, जिसके through दुनिया का विनाश हो रहा है. And the second was civil wars, which is increasing nowadays. घर घर में झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीजें बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं? हाँ, शीला मैम क्या कहेंगे? बढ़ रही है ना? So third, yes, and the third was natural calamities. ये बढ़ रही है, कम हो रही है? अचानक भूकंप आ जाना, अचानक जो है बारिश आ जाना, ये भी सब बढ़ रहा है ना, सब कुछ बढ़ रहा है. And this is surprising, that the Dada Lekhraj, who was initially known as Dada Lekhraj, he had these visions in 1936. In 1936, he had these visions. और बाबर ने ये चीजें जब दिखाई थी इनको, और हिरोशिमा नागासाकी पे जो फर्स्ट बम फेंका गया था, that was in 1945. So he had visions before that. And then God, the other vision which he had, that was of because he could not tolerate the scene which he saw in trance. And then he requested God that I cannot see this happening to the world. I just want to see something nice. And then God showed him another scene, which was the deities were coming down. And when they were coming down, entering the body, somebody was becoming Devi and somebody was becoming Devta. He had a vision of Vishnu Chaturbhuj. Vishnu Chaturbhuj again is a symbol that we were like deities. In Christianity, it is said that God created man in his own image. Own image means what?
that we were also God, goddess with small God. And with God capital, we use for Supreme Father, the point of light. So when he comes on this earth, then he makes us like Devi Devta, because Devi Devta means the deities, means God, goddess means that we had values in our life, we had virtues in our life. So this is why the living was comfortable and the world which was there, that was heaven. So these are the reasons when he had. So then he told his partner, because he was a very, very famous jeweler. Then initially he did not understand what is happening to me. But later on, he slowly, he diverted his attention in Sindhism. In Sindhism, they read Guru Vani. And he was reading Guru Vani, and then he was reading Gita also. Sindhis log jo hote hai na, the Gita party bhi hote hai. So then what was happening with him, while he started doing some satsang, the ladies and the gents, they were coming and the satsang started. And at that time, what was happening, he was opening Gita to read, but the automatically Gita बंद हो जाती थी और इनकी बॉडी में परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है उनकी प्रवेशता हो जाती थी. Then God, the point of light, changed his name from Dada Lekhraj to Prajapita Brahma, and he is the person who is known as in scriptures as Adi Dev, Adam, Brahma. आदम हवा का जो जिक्र आता है ना, वो सब इन्हीं के बारे में आता है. So this is how the institution started, and then later on, when the young sisters, they started coming, they started liking this knowledge, they brought letters from their parents that we want to do this godly study, and because it is very good, like you people are liking. When they started liking, initially उस समय तो ये बहुत ज्यादा हंगामा हुआ कि भाई लेडीज के लिए तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, they should get married and they should do something else. But when the ladies showed interest, even those who were married, they started coming. They found lot of changes in their lifestyle. तो उसके बाद क्या हुआ, when they all started coming, so then this group was formed, and these are the same sisters, which we see in the institution as Didi Dadis, head of the institution. When all of you will happen to visit the headquarters, so then you will see how the institution is running now with these sisters. क्योंकि उस समय when the father of humanity said to these sisters that a day will come in your life that you will go all around the world and give the message of God to each and every soul in the institution as well. So they did not understand what does this mean, because they did not see the world at that time. But now when they have seen the world, they realized, yes, how big the world is and how the Baba had the vision. So we call Supreme Father, point of light, God Shiva as Baba, means the father. और वो क्या हो गया, फादर ऑफ द फादर. तो फादर ऑफ द फादर को क्या बोला जाता है, ग्रैंडफादर बोला जाता है. So it's a loveful word. So this is why we call him also Brahma Baba. So these are the sisters, why the name institution was named as Brahma Kumaris, because we are the adopted children of Brahma. So everybody is the child of Brahma, but we don't know, the others don't know, and we know it, that how he adopted us. We adopted the principles of cleaning our own life, like mental cleaning. Mental cleaning में क्या आता है कि मुझे अच्छा सोचना है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को परे रखना है. So these were the teachings which were given by, and this is how this institution stands. लोग कहते हैं ना कई बार, they why, because the people may ask you about it. This is why I just thought to share with you. People may ask you, what is the base of this institution? The base of this institution is values. And this was taught to us because the God, he made him the instrument to teach us the knowledge, to give us the knowledge. And whatever knowledge is imparted here in this institution, after partition, 1945, so they all in 1950s, they shifted from Karachi to Mount Abu. And that's a long story. So these are small children, just you see. And after that, when they shifted here,
Then they shifted in Mount Abu, and they did not have any funds, because all the funds which Brahma Baba had all got exhausted. But they all had the belief कि नहीं, भगवान हमारे साथ है, and he is there to look after us. So these are the small children, you are finding the mother, the Janki Dadi. Are you seeing that she is the one who is sitting there? So like this. So they are the one, they were working and they were bringing things. And this is how the institution got established. And now this is there in Panda Bhavan, the original place, which is in Mount Abu, where we go and we meditate, so we get lot of power. So whosoever enters these rooms, because the godly task was done through him, and he lived there till 1969, 18th January, and he attained perfection. Perfection means all the negativity had gone from his life. And this is why this institution aimed to purify the self to this extent that we get complete pure. And the 4 places which we consider as sacred places at the headquarters, Mount Abu, when you will go there, you will like to visit these places. And this is the original complex where we have the room of Baba, the God, the Brahma Baba, and the God was entering in his body, and then he was giving the knowledge. Then the cottage where he was writing letters, and then on the top, on the left, you are seeing where his body was kept, and the final cremation was done. And the other side, right side, you are seeing it's a room where the classes were going on. So these are the main places which we go and we just remember. It reminds us of the activities and the actions which he has done. So this is the Gyan Sarovar Mount Abu complex, which is a very beautiful complex. Academy for a Better World, it is known as. Whosoever goes there, they all admire such places, and they find it very interesting and beautiful, like the retreat centers. And ऊपर आप देख रहे हैं कि solar को दिखाया गया, which is also a beautiful place. So this is how the Brahma Kumaris have the main campus, Shantivan. You are finding it, and like this, many places. And we have in Delhi, in Gurgaon, the Om Shanti Retreat Center, and this is the Palam Vihar Center, Gurugram, from where we just give you this program. So we celebrate this day as World Peace Day, 18th January, and we just take the pledge that we will imbibe something nice in our own life. So this is all about the history of Brahma, Adam, or the Adi Dev, or we can say the Adam, which we read in scriptures, but we don't know. But today I just thought to share with you. Thank you with this all that. Thank you. दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी नॉलेज, स्पेशली आपके ब्रह्मा कुमारी के बारे में दी। हम लोगों को शायद इतना पता ही नहीं था। प्रजापिता ब्रह्मा, he is truly a sustainer of humanity. हम लोग चाहेंगे कि हम भी उनके कदमों में थोड़ा सा भी चल पड़े और स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाएं। मेरे कर्म ही मेरे पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या, वह तो मेरे साथ ही चला जाएगा। 18 जनवरी ट्यूसडे को हेलो जिंदगी प्रोग्राम को हम 1 दिवसीय विश्राम देंगे, क्योंकि हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस, AIWC हेड ऑफिस हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस है। सो आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद दिस। और हेलो जिंदगी हम सबको बहुत प्रिय हो गया है, और मुझे पर्सनली भी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कई बार ये शायद इसीलिए हो रहा है कि मैं भी मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी, जो शायद हम लोग जिंदगी की भाग दौड़ में, झूंझ में शायद हमें लगता है कि हम लोग नहीं कर पाते। सो इट इज वेरी वेरी अवेकनिंग, एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर आपका, And आपके one लिए तहे thing दिल I से would मैं like to, yes, सबकी thing तरफ I से would मैं तहे like दिल to से say, if it is possible on 18th January, you can start your meeting with 5 minutes silence. Okay? Okay. जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। गायत्री जी, जो आप फैकल्टी हैं ब्यूटी कल्चर की ABI सेंटर, प्लीज आप अपना थैंक यू प्रपोज कीजिए। गायत्री जी। आप सभी को मेरा आदर नमस्कार। मैं गायत्री शर्मा, AIWC ब्यूटी टीचर।
मुझे धन्यवाद ज्ञापन का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसका मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हम सभी यहाँ पर ज्ञान धारक के रूप में इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। इसका कारण हमारे प्रमुख अतिथि श्रीमती उर्मिला दीदी हैं। गायत्री जी थोड़ा सा वॉइस थोड़ा ऊंचा, तो थोड़ा सा सुनाई कम दे रहा है, प्लीज। इसका मुख्य कारण है हमारे प्रमुख अतिथि श्री उर्मिला दीदी जी हैं। इनके प्रभावशाली विचारों ने हमें आकर्षित किया है और आदरणीय दीदी उर्मिला जी का आपके इन शब्दों से हमें काफी प्रेरणा मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रकट करते हैं। मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी मैम दीदी के लिए। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसे एक आस हर दिल में जगी है, वैसे एक आस हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका उज्जवल व्यक्तित्व, सलामत रहे आपका उज्जवल व्यक्तित्व। आपके सुविचारों से इस AIW के आंगन में एक रोशनी जगी है। साथ ही हेलो जिंदगी के इस हेलो जिंदगी प्रोग्राम में ऐसी प्रतिभा संपन्न अतिथियों को आमंत्रित करके प्रेसिडेंट महोदया श्रीमती शीला दीक्षित जी और जनरल सेक्रेटरी श्रीमती कुलजीत कौर जी और ट्रेजरर रेहाना बेगम जी का भी मैं तहे दिल से AIW परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी श्वेता राय तलवार जी का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और हमारे AIW सभी के परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम का आनंद उठाया। धन्यवाद गायत्री जी। श्रीमती शीला खाकरे जी जो हमारी प्रेसिडेंट AIWC की है, मैम आप प्लीज थोड़ा सा, आपको कैसा ये लगा, प्लीज जरा सा बताएं। Shweta, my privilege to talk with you people always, but मैंने ये सोचा था कि सब जो हमारे स्टाफ मेंबर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिले इस वेबिनार के जरिए आपका उनके मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है, ये प्रोग्राम की सीरीज शुरू हो रही है, इसके कारण वो प्रकट करे और आपको भी अच्छा लगे देखते हुए कि जिस उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, जो डर था इनके मन में कोविड के कारण, पिछले साल में जो कोविड का हमें जबरदस्त फटका मिला है, जो भी डर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए हमने सोचा कि ये प्रोग्राम थोड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा। उर्मिल दीदी से भी मेरी बात हो गई, उसी दरमियान उनके एक प्रोग्राम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और हमने ये तय कर लिया कि ऐसा प्रोग्राम स्टाफ के लिए करते हैं। तो जैसे जैसे एक एक दिन हमने 10 प्रोग्राम का तो ऑलरेडी रिजर्वेशन करके रखा हुआ है वेबएक्स के साथ और आगे भी हम करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो अच्छा लग रहा है, बट जैसे जैसे आप देखते हैं दो लोग एक एक डिपार्टमेंट से आकर अपने विचार प्रकट करते हैं, कोई वेलकम करता है, कोई थैंक यू बोलता है, तो उससे ही हमें मालूम होता है कि अच्छा लग रहा है। मीन्स दे कैनॉट एक्सप्रेस मोर मे बी, बट उनकी फीलिंग अच्छी है इसके बारे में। धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, उर्मिल दीदी आप भी सहमत हो जाएंगे कि उनके मन में भी क्लैरिटी आ जाएगी उनके विचार प्रकट करने में और मन स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा उनका। सो थैंक यू वेरी मच आपका और आपके बाकी सारे सहयोगी जो पूरे हफ्ता, पूरे मेरे ख्याल से 6वां है ना अपना श्वेता, ये 6 हो चुके हैं मैम, 6। हाँ, तो हर वक्त नए नए स्पीकर्स हमारे पास आकर अपने टॉपिक्स के बारे में बताते रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है हमारे मेंबर्स ने। सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, आपने जो सहायता, आपके टीम ने जो सहायता हमें दी है, इसलिए थैंक यू श्वेता। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ओम शांति।